Assalamu alaikum students. I hope all of you would be well and enjoying your holidays. I welcome you all in the new class and I know that you would be excited to open your new books and start studying. आज हम क्लास 4 का फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे. Title of the unit is The Silver Fish. So let's begin reading. बेटा ओपन योर बुक्स ऑन पेज 1. वहाँ पर आप द सिल्वर फिश के नाम से एक पोएम लिखी हुई देखेंगे. उम्मीद है आप बुक्स ले चुके होंगे, लेकिन वैसे मैंने बुक का पेज आपके लिए इस स्लाइड पर भी लगा दिया है. सो लेट्स बिगिन रीडिंग. द सिल्वर फिश. While fishing in the blue lagoon, I caught a fish. I caught a lovely silver fish. And he spoke to me, my boy, quoth he, please set me free and I'll grant your wish, a kingdom of wisdom, a palace of gold, or all the goodies your mind can hold. So I said, okay, and I threw him free. And he swam away and he laughed at me, whispering my foolish wish into a silent sea. Today I caught that fish again, that lovely silver prince of fishes, and once again he offered me, if I would only set him free, any one of a number of wonderful wishes. He was delicious. So we will read this lesson again and I will explain the meaning, and side by side I will tell you the words meanings which we have written on one side. बेटा हम इसकी रीडिंग दोबारा करेंगे और साथ साथ मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी. आपने भी बुक से मेरे साथ साथ पढ़ना है और जो साइड पे वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हुए ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं. While fishing in the blue lagoon. ब्लू लगून का मतलब है दरिया या झील. तो जब इसमें पोएट लिख रहा है कि जब मैं ब्लू लगून में फिशिंग कर रहा था, यानी मैं मछलियां पकड़ रहा था, आई कॉट अ लवली सिल्वर फिश. मैंने एक खूबसूरत सिल्वर कलर की चमकीली मछली पकड़ी. एंड ही स्पोक टू मी, माई बॉय कोथ ही. और ये मछली बहुत अजीब थी, बहुत हैरान कुन थी, आम मछलियों से फ़र्क थी क्योंकि उसने बातें शुरू कर दी और शायर से कहा, प्लीज़ सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे छोड़ दो, एंड आई विल ग्रांट योर विश, और मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा. अ किंगडम ऑफ विजडम, अगर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अकल मांगोगे, अकल की बादशाहत मांगोगे, किंगडम का मतलब होता है बादशाहत, तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा. अ पैलेस ऑफ गोल्ड, या तुम मुझसे सोने का महल मांगोगे तो मैं तुम्हें सोने का महल दे दूंगा. पैलेस क्या होता है? महल. और ऑल द गुडीज योर माइंड कैन होल्ड, बल्कि इसके अलावा भी अगर मुझसे तुम कोई और चीज भी मांगोगे जो तुम्हारे जहन में आती है तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा. सो आई सेड ओके एंड आई थ्रू हिम फ्री. तो इसने सोचा कि चलो ठीक है, इतनी सारी चीजें ये मुझे देने को राजी है तो क्यों ना मैं इसको आजाद कर दूं. उसने उसको वापस दरिया में समुंदर में छोड़ दिया. And he swam away and he laughed at me. तो हुआ क्या? वो मछली जल्दी से दूर जाके तैरने लगी. swam away, दूर चली गई तैरती हुई और इसकी तरफ हंसने लगी. whispering my foolish fish into a silent sea. और मेरी जो फूलिश विश थी, यानी जो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उसको आज़ाद छोड़ दिया, उसका मजाक उड़ाती रही, हंसती रही, मुझ पे कहके लगाती रही. और विस्परिंग होता है सरगोशी. तो मेरी जो बेवकूफ़ी थी उसका मजाक उड़ाते हुए वो दरिया में मेरे बारे में ये कहती रही कि ये कैसा बेवकूफ़ था कि इसने मुझे आज़ाद कर दिया. मैं तो ना ही इसकी कोई विश पूरी करूँगी और ना ही मैं इसके पास अब ये मुझे खा सकता है. Today I caught that fish again. आज अचानक फिर एक ऐसा दिन आया कि अचानक उसने दोबारा वो मछली पकड़ ली.
That lovely prince of wishes, وہی والا, وہی جس نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کو دھوکہ دیا تھا. And once again he offered me, اور ایک دفعہ پھر اس نے مجھے آفر کی, اس نے مجھے پیشکش کی, اس نے مجھے کہا if I would only set him free, اگر تم مجھے آزاد چھوڑ دو گے, any one of a number of wonderful wishes, کوئی ایک تمہاری خوبصورت خواہش میں پوری کر دوں گا. آپ دیکھیں اس کے آگے 3 ڈاٹس لگے ہوئے, ان 3 ڈاٹس کو کہتے ہیں ایلپسز. ایلپسز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات یہاں پر ابھی پوری نہیں ہوئی, بلکہ شاعر نے اس کو آدھے میں چھوڑ کے اگلی بات پہ چلا گیا, اور وہ کیا ہے, he was delicious. اس کا کیا مطلب ہوا بچوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ پوئٹ نے اس مچھلی کی بات پر بالکل اعتبار نہیں کیا اور اس کو پکا کر کھا لیا. تبھی تو اس کو پتا چلا کہ وہ ڈیلیشیس تھا. ڈیلیشیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت مزیدار. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ تو اس نے دھوکہ کھا لیا, لیکن دوسری دفعہ اس کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا. بیٹا آپ نے یہ ورڈز میننگز اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. بلو لگون کا مطلب ہوتا ہے دریا یا جھیل. کاٹ پکڑنا. کوت کہا یا بولا. کنگڈم بادشاہت. وزڈم دانائی, عقل کی بات کو وزڈم کہتے ہیں. وسپرنگ, وسپرنگ کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی. وش خواہش. آفرڈ پیشکش کی. ونڈرفل حیران کن. ڈیلیشیس مزیدار. بیٹا ناؤ